जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
Parivrajakacharya Suttarasajasishima. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Suttarasajasishima. His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopi Goshyama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai. Gaura Premanande Hari Hari Bol Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Kanturaj Srimad Bhagavatam Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Text 38, huh? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, let me first introduce myself, since it's not the first time I'm here, but it's been a long time. It's more than 15 years since I came here first time. जी बता रहे हैं कि वो यहाँ पे पहली बार नहीं आए हैं, परंतु 15 साल से भी पहले एक बार यहाँ पे आए थे. Or a brief visit, so even if you were there, you may not remember me. तो उस समय जब प्रभु जी आए थे तो बहुत कम समय के लिए आए थे, इसलिए अगर आप में से हम में से कोई उपस्थित भी होंगे तो उनको हो सकता है याद नहीं होगा. So my name is Gaura Hari Manachari. प्रभु जी का नाम श्रीमान गौर हरि प्रभु है. I was born in Copenhagen 63 years ago. प्रभु जी का जन्म आज से 63 साल पहले कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था. You heard about Denmark? Never heard about that place. Small country in Northern Europe. And I joined ISKCON in Copenhagen in 1980. डेनमार्क एक यूरोप में छोटा सा देश है. प्रभु जी ने ISKCON संस्था को ज्वाइन वहाँ पे किया कोपेनहेगन में 1980 में. And it's not been a dull time in ISKCON. It's been full of excitement these years. तो प्रभु जी का जो समय ISKCON संस्था के अंदर है वो बहुत अच्छा है और प्रभु जी को बहुत अच्छे अनुभव संस्था के अंदर हुए. And to make a long story short, I've been a vanaprastha for the last
more than 20 years now. और प्रभुजी पिछले 20 साल से भी ज़्यादा समय से वानप्रस्थ आश्रम में थे। Before that, I was a grihasta, and my service during my grihasta years, basically most of the time was as a translator, editor in the BBT, translating to my local language, Srila Prabhupada's books. तो 20 साल के पहले प्रभुजी गृहस्थ आश्रम में थे और उस समय उनका प्रमुख सेवा भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट की जो पुस्तकें हैं उनको उस देश की भाषा में अनुवाद करने की सेवा थी। And I've done many other things also, but now I'm based in France and I spend time in India also. अभी प्रभुजी फ्रांस में रहते हैं और भारत में भी समय देते हैं। I've been here now for 4 months, and it will be another month before my schedule return to France. तो मैं पिछले 4 महीने से यहाँ भारत में हूँ और 1 महीने बाद फ्रांस वापस जाऊँगा। So I'm very happy to be here in Vadodara. मैं यहाँ बड़ौदा में आकर बहुत खुश हूँ। I feel very honored to be allowed to say something to the best of my ability about Krishna consciousness. भगवान कृष्ण को प्रशंसित किए जाने का ये जो मुझे अवसर मिला है उससे मैं बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ। Hare Krishna. So, Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 2, Hiranyakashipu, King of the Demons, Text 38. Aha Vayam Danya Tamaha Yat Atra Chattaha Pitribhyam Na Vichintayamaha Abhakshamanaha Abala Rika Adivi Saha Parakshita Parakshati Yaha Hi Garbhe Aho Vayam Danyatama Yadacha Chaktaha Pitribhyam na Vichintayamaha Chaktaha Pitribhyam na Vichintayamaha Abhakshamana Abhakshamana abala vikadibihi Sarakshita rakshati yohi garbhe Sarakshita rakshati yahi garbhe Aho Vayam Danyatama Yadatra Chattaha Pitribhyam na Vichintayamaha I think the volume is a little too loud. It's just on the border of distortion, and
This is booming sound that actually makes, that's better, yeah. I think it's good now. Yes, I can put my mouth a bit closer to the microphone. Like this, I think. Yes? Okay, thank you. Okay, we finish. Abhakshamana abalavrikadibhi Sarakshita rakshati yo hi garbhe. Okay, next one. Bahovayam danyatamaya datra Yakta pitipyam na vichintayamaha Abhakshamana balavikadibhi Sarakshita rakshati yo hi garbhe Bahovayam danyatamaya datra Yakta pitipyam na vichintayamaha Abhakshamana balavikadibhi Sarakshita rakshita yo hi garbhe Bahovayam danyatamaya datra Yakta pitipyam na vichintayamaha Abhakshamana balavrikadibhi Sarakshita rakshati yo hi garbhe Bahovayam danyatamaya datra Yakta pitipyam na vichintayamaha Abhakshamana balavikadibhi Sarakshita rakshati yo hi garbhe. Ladies. Bahovayam danyatamaya datra Yakta pitipyam na vichintayamaha Abhakshamana balavikadibhi Sarakshita rakshati yo hi garbhe Bahovayam danyatamaya datra Yakta pitipyam na vichintayamaha Rakshati yo hi garbhe. Aho, alas, alas. How we do this? You just say the translation and they repeat that one. Vayam, we. हम सब Danyatama, most fortunate. अत्यंत भाग्यशाली Yat, because. क्योंकि Atra, at the present moment. इस समय Chaktaha, left alone without protection. असुरक्षित अकेले छोड़ी हुई Pitribhyam, by both father and mother. पिता तथा माता दोनों के द्वारा Na, not. नहीं
Vichintayamaha. Worry. चिंता करते. Abhakshamanaha. Not being eaten. ना खाई जाकर. Abalaha. Very weak. अत्यंत निर्बल. Rika adibhi. By tigers and other ferocious animals. भेड़िया तथा अन्य हिंसक पशुओं द्वारा. Saha. He, the Supreme Personality of Godhead. वह भगवान. Rakshita. रक्षिता. Will protect. रक्षा करेगा. Rakshati. रक्षति. Has protected. रक्षा कर चुका है. Yaha. Who. जो. He. Indeed. निश्चय ही. Garbhe. गर्भे. Within the womb. गर्भ के भीतर. Translation: It is wonderful that these, I should say, this is spoken by Yamaraj, who is in यमराज के द्वारा बोला गया है. the guise of a little boy, Brahmana boy. यमराज एक छोटे उम्र के ब्राह्मण बालक के रूप में आए थे. He's speaking to the widows of King. What is his name? Huh? Suyagna. Huh? वो यमराज छोटे बालक के रूप में आके राजा सुयग्नि की जो विधवा पत्नियां हैं उनसे बात कर रहे हैं. And this is narrated by none other than Hiranyakashipu. और ये संपूर्ण वृत्तांत हिरण्यकशिपु के द्वारा बताया जा रहा है. Right. I didn't have time to check, but according to my memory, that is what's going on. So he's. हिरण्यकशिपु के द्वारा ये संवाद किए जा रहे हैं. So anyway, he's saying, Yamaraj is saying, it is wonderful that these elderly women do not have a higher sense of life than we do. Indeed, we are most fortunate, for although we are children and have been left to struggle in material life, unprotected by father and mother, and although we are very weak, we have not been vanquished or eaten by ferocious animals. Thus, we have firm belief that the Supreme Personality of Godhead, who has given us protection even in the womb of the mother, will protect us everywhere. अनुवाद. यह कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है. निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं, तो भी हिंसक पशुओं ने ना तो हमें खाया ना विनष्ट किया. इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है, वे ही सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे. Purport by Srila Prabhupada. As stated in Bhagavad Gita 18:61, Ishvaraha sarvabhutanam hridyasya arjuna tishtati. The Lord is present in the core of everyone's heart. Thus, the Lord gives protection to everyone and gives the different types of bodies the living entity wants to enjoy. Everything is done by the order of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, one should not lament the birth and death of a living being, which have been arranged by the Supreme Lord.
Lord Krishna says in Bhagavad Gita 15:15, Sarvasya chaham ridi sanivishto mata smiti jnanam apohanam cha. I'm seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. One must act according to the direction of the Lord within the heart. But because the conditioned soul wants to act independently, the Lord gives him the facility to act and experience the reactions. The Lord says, Sarva dharman parijyaja mamikam sharanam vaja. Give up all other duties and simply surrender unto me. One who does not abide by the orders of the Supreme Personality of Godhead is given the facility to enjoy this material world. Instead of restricting him, the Lord gives the conditioned soul the opportunity to enjoy, so that by mature experience, after many births, bahunam janmanam ante, he will understand that surrender to the lotus feet of Vasudeva is the only duty of all living beings. तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 18 अध्याय 61वें श्लोक में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। इस प्रकार भगवान सबों की रक्षा करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार भोगने के लिए जीव को विभिन्न शरीर प्रदान करते हैं। सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से होता है। अतएव हमें जीव के जन्म तथा मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर द्वारा नियोजित होते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम् अपोहनम् च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। मनुष्य को चाहिए कि हृदय में स्थित भगवान की आज्ञा अनुसार ही कर्म करे, किंतु जीव स्वतंत्र होकर कर्म करना चाहता है। अतएव भगवान उसे कर्म करने तथा फलों का अनुभव करने की सुविधा देते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता, उसे इस भौतिक जगत का भोग करने की सुविधा दे दी जाती है। भगवान बद्ध जीव को रोकने के बजाय भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे परिपक्व अनुभव होने पर अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते वह यह समझे कि वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना ही सारे जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। So first, let me just apologize that I didn't get up for the first part of the morning program. Some bodily problems are there. Closer to the mic. Yes. Okay. So. आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कक्षा का पूरा तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ शारीरिक समस्याओं के कारण मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। I don't want to get into the details. It's not important, but शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। So it is indeed wonderful that such sagacious advice is being given by a demon like Hiranyakashipu. ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इतना अच्छा जो सुझाव है ये हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के द्वारा दिया जा रहा है। Chanakya Pandit also said that
one should take good advice even if it comes from a fool. चाणक्य पंडित ने भी कहा है कोई व्यक्ति अगर कोई बुरा आदमी भी अच्छा सलाह देता है तो व्यक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए. One should accept gold even if it's taken from you find it in a filthy place. जिस प्रकार से अगर आपको स्वर्ण कोई गंदी जगह पे भी मिलता है तो आप तुरंत उस स्वर्ण को सोने को स्वीकार कर लेते हैं. One should accept a qualified wife even if she is not of high birth. और जिस तरह से अगर हो सकता है होने वाली पत्नी जो है उसका जन्म उतने अच्छे कुल में नहीं हुआ हो परंतु वो अपने स्वभाव बाकी वस्तुओं से बहुत सभ्य है तो उसको स्वीकार किया जा सकता है. And one should take a good advice even if the person who gives it is generally not a very wise person. उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हमें कोई सलाह दे रहा है जो स्वयं ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है परंतु उसकी सलाह अच्छी हमें लगी है तो हम उस सलाह को स्वीकार कर लेना चाहिए. Of course, Hiranyakashipu is not an ordinary demon, but that's a whole other story. He's, of course, one of the gatekeepers of Vaikuntha who have been cursed to play the role of a demon. वास्तविकता में हिरण्यकश्यप कोई सामान्य असुर नहीं है क्योंकि हम दूसरी कथा में देखते हैं कि वैकुंठ के द्वार पे जो द्वारपाल थे उनमें से एक द्वारपाल हिरण्यकश्यप के रूप में उसको साफ मिला था और इसलिए वो हिरण्यकश्यप के रूप में आया था. So, but here he is instructing the widows of his brother Hiranyaksha. यहाँ पे वो अपने भाई हिरण्याक्ष की जो विधवा पत्नी है उनको सलाह दे रहा है. After Hiranyaksha was killed by Varahadev, जब हिरण्याक्ष को भगवान वराहदेव ने मार दिया था उसके बाद, and he is instructing them by way of this story, or not story. It's a historical incident. और उन विधवाओं को बताते समय वो एक पुराना ऐतिहासिक कथानक के बारे में बता रहे हैं. I believe this Suyagya, he was a real king who actually. मुझे ऐसा लगता है कि ये राजा सूर्य इसमें बताया गया है ये एक वास्तविक राजा थे. And he died on the battlefield, but there was a problem because he was supposed to. The system is, of course, that his body should be burnt before sunset. I think that is the Vedic system, right? If you die during the day, your body must be cremated before sunset. तो राजा सूर्य के जो थे वो रणभूमि में उनके प्राण त्याग किए थे. और यहाँ पे एक बात हम देखते हैं कि सामान्यतः वैदिक समाज में अगर कोई व्यक्ति दिन में किसी की मृत्यु होती है तो उसको सूर्यास्त होने के पहले उसको जला दिया जाता है. I'm speaking from memory, so you correct me if I remember wrong, but I think that is the context, right? So, but there was a problem because the queens, the widows of King Suyagna, they were surrounding him, his dead body that is, on the battlefield, and they refused to. They were so attached. And in the bodily concept, because they were thinking, oh, this is our king, he's lying here. It's not the king, it's just his body. तो उसकी जो पत्नियां थी राजा सूर्य की पत्नियां उसके मृत शरीर को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और समय भी निकलता जा रहा था परंतु अपनी शारीरिक चेतना के कारण वो ये सोच रही थी कि ये तो राजा है जबकि वास्तविकता में वो राजा नहीं था राजा का मृत शरीर था. So they wouldn't allow the king to be cremated, so they were stopping the procedures. वो रानियां जो थी वो राजा के मृत शरीर को जलाने के लिए नहीं ले जाने दे रहे थे और इस पूरी प्रक्रिया को
अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। So something had to be done to convince them that, they were mistaken. तो उस समय कुछ ऐसे कार्य की आवश्यकता थी जिससे कि उन रानियों को उनकी गलती को महसूस कराया जाए और दाह संस्कार पूर्ण किया जाए। So Yamaraj came in the guise of a little boy to give them good instructions, to bring them to their senses. तो यमराज उस समय एक छोटे बालक के जैसे आते हैं कि जिससे उनको सही निर्देश दे सकें, उनको सामान्य अवस्था में वापस ला सकें। So it's very profound what he's saying here. It is. यहाँ पे यमराज जो बता रहे हैं वो बहुत ही सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान है। Prabhupada explains in one purport also, I think, that the reason why Yamaraj came in the guise of a little boy is that, if a little child speaks philosophy, people, they become very eager to listen. बताते हैं कि इसका क्या कारण था कि यमराज एक छोटे बालक के रूप में आते हैं, क्योंकि अगर कभी छोटा बालक कोई सिद्धांत बताता है तो लोग उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। So he is saying that it is wonderful that these elderly women do not have a higher sense of life than we do. तो यहाँ पे यमराज बता रहे हैं कि यह कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है। I'm just a little boy, and you are elderly women, and you should know better. He's actually chastising them. तो वो बता रहे हैं मैं तो एक छोटा बालक हूँ और आप तो बहुत वृद्ध महिलाएं हैं, तब भी आपको ये बात नहीं पता है। He says, indeed we are most fortunate, for although we are children and have been left to struggle in material life unprotected by father and mother, and although we are very weak, we have not been vanquished or eaten by ferocious animals. वो यहाँ बता रहे हैं कि निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं तो भी हिंसक पशुओं ने ना तो हमें खाया ना विनष्ट किया। So he has personal experience, this little boy, that Krishna is protecting him even in this awkward circumstance. तो ये छोटा बालक जो था उनको पूरी तरह से अनुभव था कि भगवान कृष्ण हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं हर परिस्थिति में। He is explaining that he is apparently an orphan, no parent, no father, no mother, and he is apparently in the jungle. तो इसमें ये यमराज बता रहे हैं कि वो बालक जो है वो एक अनाथ बालक है, उनके माता पिता नहीं है और वो जंगल में घूमते हैं। Because he speaks about ferocious animals. क्योंकि वो हिंसक पशुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि वो जंगल में रहते हैं। It's practically an impossible situation. A small child left alone in the wilderness, how he will survive? तो ये बहुत अजीब घटना है कि एक छोटा बालक जंगल में अकेला है और वो कैसे अभी तक जी रहा है। But still, he's explaining, he's relating his personal experience that I'm living still. यहाँ पे वो छोटे बालक अपने स्वयं के अनुभव से बता रहे हैं कि मैं अभी तक जीवित हूँ। And therefore he says that thus we have firm belief that the Supreme Personality of Godhead, who has given us protection even in the womb of the mother, will protect us everywhere. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमें अभी पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने माता के गर्भ में मेरी रक्षा की थी, वो ही मेरी रक्षा हमेशा करेंगे। This is also one of the 6 symptoms of surrender. ये भी
समर्पण के 6 अंगों में से एक अंग कहलाता है। What is it in Sanskrit? You mentioned the word Rakshasi. राक्षसी विश्वास, Rakshasi Divisvasa. इति विश्वास, Iti Vishvasa. That to have firm faith, Vishvasa. समर्पण का एक अंग होता है कि हमें पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान रक्षा करेंगे। Have firm faith in the protection of the Supreme Lord. भगवान के द्वारा दिए गए संरक्षण में पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा होनी। When a child is within the womb of the mother, that would normally be considered about the most safe position. जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, नॉर्मली लोग समझते हैं कि वो बहुत ही सुरक्षित स्थान है। Although, alas, in this modern day, it's not so safe anymore. परंतु इस कलयुग में हम देखते हैं कि वो स्थान भी सुरक्षित नहीं है। For reasons that we will not get into at this point. इस कक्षा में हम इन कारणों के बारे में वर्णन नहीं करेंगे। But even though one may think that it's the mother who is protecting the child within the womb, within her womb, अगर हम ये सोचें भी कि माता वास्तविकता में उसके गर्भ में जो बच्चा है उसकी रक्षा कर रही है, तो भी he is saying here, Yamaraj, that actually it is Krishna who is protecting the child even within the womb of the mother. यहाँ पे यमराज बोल रहे हैं कि वास्तविकता में तो कृष्ण ही बच्चे की रक्षा करते हैं, माँ के गर्भ के अंदर भी कृष्ण ही रक्षा करते हैं। So yes, this is very important for devotees to understand that ultimately it is only by Krishna's mercy that we are living. तो भक्तों को वास्तविकता में ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये कृष्ण की कृपा ही है जिसके कारण हम जीवित हैं। This material world is a very dangerous place. ये भौतिक संसार एक बहुत भयानक स्थान है। At any moment something can happen that will seriously how to say, you can say, obstruct our enjoyment. किसी भी समय, किसी भी क्षण कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जो कि हमारे भौतिक सुख के प्रयास को रोक सकती है। This planet, especially this Earth planet, is known as Marchaloka. इस भूलोक को विशेष रूप से मर्त्यलोक कहा जाता है। But Krishna says that every planet in this material world is Marchaloka. भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस भौतिक संसार का हर लोक ही मर्त्यलोक कहा जाता है। Marchalokam Vishanti. Every Abrahma Puvana Loka Puna Avachino Jana Mamuki Pecha Tukadya. How is it? No, I was mixing so. Somewhere else in the vicinity of that verse, Krishna speaks about this material world as, the whole material world as Marchaloka. भगवान भगवद गीता में बताते हैं इस तरह से, इस पूरे भौतिक संसार को मर्त्यलोक बताते हैं। Especially on this planet Earth, we are living entities are taking birth and dying in quick succession. विशेष रूप से इस भौतिक संसार में धरती मतलब इस भूलोक पे जीव जो है वो जन्म लेते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। And we see this, especially here in India. भारत में भी हम इस चीज को देखते हैं। In the West, because the civilization is so godless that people cannot face the reality of death. पाश्चात्य देशों में तो वहाँ का जो समाज है वो इतना ज़्यादा नास्तिक है कि वो मृत्यु की सत्यता को देख ही नहीं पाता। I spent the first part of my life before ever coming to India. That means I was about 26 or 27 when I came here first time.
during all this time, I never saw a dead human being. Of course, dead animals, we were eating them, but no human beings. I never saw a dead body, a dead human. मैंने भी अपने जीवन का प्रारंभिक हिस्सा पाश्चात्य देशों में निकाला। 26-27 साल की उम्र में मैं इस्कॉन में आया था, परंतु उसके पहले मैंने कभी भी मृत व्यक्ति को नहीं देखा, मरे हुए व्यक्ति को नहीं देखा। हालांकि हम लोग मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे, परंतु मरे हुए व्यक्ति को मैंने कभी नहीं देखा। Because everything, they are very efficient in removing anything that could remind us about, the reality of life and death. पाश्चात्य देशों में लोग इतने ज़्यादा तेज हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु जिससे हम जीवन और मृत्यु की सत्यता का पता करेंगे उसको तुरंत हटा दिया जाता है। If there's an accident on the road, which of course happens very often, in few minutes there will an ambulance will arrive and pick up the dead body or dead bodies and clean up the mess if there is a mess. जिस तरह से कभी वहाँ पे पाश्चात्य देशों में अगर सड़क पे दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो कुछ ही मिनट के अंदर एम्बुलेंस आके लोगों को ले जाते हैं, मरे लोगों को ले जाते हैं। अगर कुछ टूट फूट हो तो उसको बहुत कम समय में वो लोग ठीक कर देते हैं, जिससे कि लोगों को पता नहीं चले। Nowadays, when there's a funeral in the West, normally you don't see the body. They put the lid on the coffin. तो अभी नॉर्मली वहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब जब दाह संस्कार होता है तो उसमें हम डेड बॉडी को भी नहीं देखते, मरे हुए व्यक्ति को नहीं देखते। So in this way, we don't see any dead bodies, no human beings, no human corpses. तो हमने कभी भी कोई मरे हुए व्यक्ति को नहीं देखा था। And you know how it looks like in India. It's quite different. भारत में ये बहुत अलग है, बहुत अलग है। Even just now, a couple of months ago, I was in Rajmundry, and as I was leaving I spent some little more than a week in the temple there, and I was leaving the town. I was taking the train. Just as I was entering the train station, one street person just was there. He had just fallen over just before I arrived and was lying there right at the entrance of the train station. कुछ ही महीने पहले मैं राजमुंदरी में था, तो वहाँ से जब मैं रेल का ट्रेन लेके जब मैं आ रहा था, तो मैं जब रेलवे स्टेशन पहुँचा तो रेलवे स्टेशन के मेन दरवाजे पे मैंने देखा कि एक व्यक्ति कुछ समय पहले वहाँ पे मरा डला हुआ था। Police was there, but they just took a cloth, covered the body, and it wasn't moved. It was allowed to stay there for, at least I didn't see any. Before I left, it was still there. पुलिस वहाँ पे आई, परंतु उन्होंने भी उसको सबको हटाया नहीं, केवल ऊपर से एक कपड़ा डाल दिया। तो मैंने जब तक मैं वहाँ पे था तब तक मैंने देखा कि उसको हटाया नहीं गया, वहीं पे रखा था। One time I was in my married days, I was taking rest, lying down to take rest. एक बार मेरे गृहस्थ आश्रम के समय मैं जब विश्राम कर रहा था एक समय, I was lying on my bed with my hands folded on my chest like this. मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, अपने हाथों को अपने छाती के ऊपर रखे हुए। And my wife said, "Don't lie like that. Don't lie. I don't like to see." तो मेरी पत्नी ने उसी समय बोला कि इस तरीके से मत सोया करिए, इस तरीके से सोते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। Because when my grandfather died, they put him like that after he was dead. They folded his hands across his chest. It reminds me about death. I don't like it. क्योंकि उसने कहा कि क्योंकि जब हमारे दादाजी का मृत्यु हुआ था तो उन्होंने उनको इसी अवस्था में रखा था, सीधा सर को रख के और छाती पे उनके हाथ को रखा था, इसलिए जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे उनका याद आता है। I told her, it's good. You should remember death. तो मैंने उससे कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, आपको मृत्यु को याद करना चाहिए। Prabhupada said, philosophy means to always keep death in front of you.
प्रभुपाद जी बताते हैं सिद्धांत का यही मतलब है कि हमेशा मृत्यु को अपने सामने देखना। But the thing is, the more, we become godless, we are become incapable of dealing with the fact that we have to die. जितना हम नास्तिक होते जाते हैं उतना हम इस तथ्य को स्वीकार करना और उसको अनुभव करना भूल जाते हैं कि मृत्यु क्या है। But the world is just such that we are, whether we want it or not, we are constantly being reminded about this fact. ये संसार इस तरीके से है कि चाहे हम हमारी इच्छा हो या ना हो, ये तथ्य बार-बार हमारे सामने आता रहता है। And therefore, actually, everyone is afraid. इसीलिए इस संसार में हर व्यक्ति हमेशा चिंतित भय है। Afraid of so many things, of course, but ultimately afraid of death. लोग बहुत सारी वस्तुओं को लेकर भयभीत होते हैं, परंतु अंततः वो मृत्यु से बहुत भयभीत होते हैं। Because for a materialist, that's the end of everything. All of his plans for happiness are frustrated at that time. क्योंकि भौतिकतावादी लोगों के लिए मृत्यु बहुत ही भयानक होती है, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने जितने भी इस संसार में सुख भोगने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, सब खत्म हो जाती हैं। And we are trying everything. It's the most basic drive for any, not just human being, any living entity, the attempt to survive. केवल मनुष्य ही नहीं, सारे जीव के अंदर ये इच्छा होती है कि किस तरह वो ज़्यादा जी सकते हैं और इसके लिए वो प्रयास करते रहते हैं। So we are living in constant fear. Everyone. हम सभी लोग इस भय में हमेशा रहते हैं। But that fear can also be used in Krishna consciousness. पर ये जो भय है, ये भी कृष्ण भक्ति में उपयोग किया जा सकता है। Because the only thing that can actually relieve us from that fear, which is the most, how to say, pertinent fact of material life. तो एक वस्तु है जिससे हम इस डर से बच सकते हैं कि हम इस संसार के जो सबसे वास्तविक तथ्य है उसको समझ जाएं। It happens immediately when we turn away from God, that we become overwhelmed by this fear. तो जब भी हम भगवान से दूर जाते हैं, तो वास्तविकता में धीरे-धीरे हम इस मृत्यु के डर से बहुत भयभीत होने लगते हैं। Hayam viniveshata shat ishad apitasya vipayayo asmitihi. When the living entity turns away from Krishna or turns against Krishna, what happens? Immediately he becomes overwhelmed by fear. जब जीव भगवान से विपरीत दिशा में जाता है, तो तुरंत ही वो भय को प्राप्त होता है। We try to not show it. We try to just forget about it. But every now and then, it's always there under the surface, and every now and then it comes out. We cannot even control it. और हम इस तथ्य को भुलाना चाहते हैं, परंतु ये तथ्य हमेशा रहता है और हमेशा छुपा रहता है। बार-बार हमारे जीवन में ये सच्चाई सामने आती है और उसको हम नियंत्रित भी नहीं कर सकते। I'm sure you all have had experiences from yourself and also just witnessing what's happening around you, that all of a sudden a person just, sometimes even you don't understand why, they just panic. तो
मैं निश्चित तौर पर बता सकता हूँ कि आप लोगों के आपके जीवन में भी आपने अनुभव किया होगा कि कई बार बहुत सारी वस्तुएं अचानक होती हैं, वो व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है। I had one experience many years ago that I'll never forget. मुझे ऐसा एक अनुभव है जो मुझे बहुत सालों पहले हुआ था, परंतु मैं उसको कभी नहीं भूल पाया। I was on the street somewhere in Denmark trying to distribute Prabhupada's books. मैं डेनमार्क में एक बार किसी गली में जाके श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरित कर रहा था। I approached, there was a group of young people sitting in a car. तो मैं कुछ एक जगह पे गया, यहाँ पे कार में कुछ जवान लोग बैठे हुए थे। I was thinking, okay, let me try if I can sell them a book. मैं सोच रहा था, वहाँ जाकर मैंने सोचा कि मुझे इन लोगों को प्रभुपाद की पुस्तक देने का प्रयास करना चाहिए। But I wasn't sensitive enough to the situation, so they didn't notice me before I was already next to the window, knocking on the window of the car. परंतु मैं परिस्थितियों को उतना नहीं जानता था और उन्होंने भी मुझे देखा नहीं। उन्होंने मुझे तब देखा जब मैं उनकी कार की खिड़की के जस्ट बगल में पहुंचा। I was from the passenger side, not the driver, the other side, and there was a young girl, probably in her teens, a young, sitting in the car on that side, inside the window. तो मैंने जो पैसेंजर सीट होती है कार में, उसकी तरफ से विंडो में आघात किया, नॉक किया और मैंने देखा कि वहाँ पे एक करीब 17-18 साल की एक स्त्री वहाँ पे बैठी हुई थी। And she hadn't noticed me. Only I knocked on the window. तो उसने मुझे नहीं देखा, परंतु जब मैंने बार-बार खटखटाया वहाँ पे तो उसने देखा। And she just went like that, completely panicked, completely screaming at the top of her lungs. और जैसे ही उसने देखा तो वो बहुत जोर से चिल्लाई, इतनी ज़्यादा डर गई, उसने दोनों हाथ उठा के बहुत जोर से चिल्लाया। I was shocked. और उसको इस तरीके से देख के मैं भी बहुत डर गया। What have I done? मैंने सोचा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। I had to give up. There was no way that I was going to even, connect. There's no way. She was just screaming and, closing. The window was open on the driver's side. She leaned over and phonetically closed that window. It was just continued. Tears were coming from her eyes. She was completely paralyzed. उसको मैंने देख के मैंने भी सोचा कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया और मैं छोड़ के जाने लगा। और फिर मैंने देखा कि वो लगातार चिल्ला रही थी, रो रही थी और ड्राइवर की साइड में जो विंडो थी उस विंडो को भी वो बंद कर रही थी। I went to a bathroom, looked in the mirror to see, what made her so scared. Was I such a horrifying sight? तो मैं पीछे जाके देखने का प्रयास कर रहा था कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे वो इतना ज़्यादा डर चुकी है, कौन सी चीज़ उसने देखी है। It was as if she had seen, the devil. तो वो इस तरीके से डरी हुई थी जैसे उसने किसी राक्षस को देख लिया। So, anyway, the point is that this fear, which is there in everyone, there's no point in denying that. तो एक तथ्य यहाँ पे समझना चाहिए कि सभी लोग भयभीत होते हैं, सबके अंदर ये भय होता है और हम उसको मना नहीं कर सकते। This can help us to remember Krishna by remembering the instructions given here by Yamaraj. तो हम उसको इस भय को भगवान कृष्ण की सेवा में उपयोग कर सकते हैं अगर इस तरीके से ये जो निर्देश हैं, इन निर्देशों को हम अपने जीवन में उतारेंगे। Srila Prabhupada's very name gives this indication how we can become fearless.
श्री प्रभुपाद हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमें भय से बचना चाहिए, भय को जीतना चाहिए। Abhay Charan, he was named by his father, one who is fearless because of having taken shelter of the lotus feet of Krishna. श्री प्रभुपाद के नाम से ही ये पता चलता है, उनके पिताजी ने उनको अभय चरण नाम दिया था। कोई व्यक्ति जब भगवान की शरण लेता है तो वो भय को जीत लेता है। Krishna is Suridam Sarvadehinam. He is the best well-wishing friend of everyone. भगवान कृष्ण सभी के सबसे अच्छे हितैषी और मित्र हैं। And he has the power to protect us. और कृष्ण के पास इतनी शक्ति है कि वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। Rakhe Krishna mare hai, mare Krishna rakhe hai. यदि भगवान कृष्ण किसी की रक्षा करते हैं तो उनको कौन मार सकता है, और अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो उनको कौन बचा सकता है। If Krishna protects us, nobody can even touch a hair on our body. अगर भगवान हमारी रक्षा करते हैं तो कोई हमें छू भी नहीं सकता है। On the other hand, if Krishna wishes to kill somebody, nothing can save that person. और दूसरी तरफ अगर कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो कोई भी उनको नहीं बचा सकता। So therefore, Bhaktivinoda Thakur, he is praying in one of his songs, Marabi Rakabi Yo Icha Tohar. That is full surrender. Krishna, if you want to kill me, then kill me. Or if you want to protect me, then I accept. इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक वैष्णव सॉन्ग में बताते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। अगर आप भगवान कृष्ण, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर आप मुझे बचाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सब आपके हाथ में है। Even if it's time to die, if we remember Krishna, we will understand it's actually Krishna who's killing me now. अगर कठिन समय भी आता है और हम कृष्ण को याद करते हैं तो कृष्ण को याद करते साथ ही हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। And therefore, I should not worry. इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। That means He will take care of me. He will take me to a good place. इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे तो हमें एक अच्छी जगह पर पहुंचा देंगे। Everything Krishna does is good. भगवान कृष्ण जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। We should have that faith, even if it seems to be bad, but actually we should have faith that it is all actually for our best. तो भगवान कृष्ण जो भी हो सकता है हमें कई बार खराब लगे, परंतु हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे सबसे अच्छे के लिए करते हैं। We are being challenged. This faith is being challenged. There's no doubt. हमारा ये जो विश्वास है इसके ऊपर कई बार आघात होने का प्रयास भी हो सकता है। But we should be determined to try to meet that challenge and always depend on Krishna. Have faith that whatever happens, it is all in Krishna's hands, and therefore there's nothing to worry about. तो जो भी आघात होता है उस आघात को सहन करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, परंतु हमें पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि जब भी कृष्ण जो भी हमारे लिए करेंगे, अगर कृष्ण हमारे साथ हैं तो कुछ भी खराब नहीं हो सकता। Hare Krishna. Any questions, comments? Give him the mic. All right, you can speak to me in English and he can. Translate. Yeah, yeah.
वैदिक साहित्य में मिलते हैं कि कुछ वैष्णवों ने भी मृत्यु की तैयारी किया है. Okay, that way. In the Vedic literature, it is said that even some Vaishnavas have tried to prepare for the death. उदाहरण स्वरूप कुलशेखर महाराज ने ऐसा कहा है कि मृत्यु से पहले मेरा कपात भी बिगड़ना है, उससे पहले मैं भगवान का स्मरण करूं और मृत्यु को प्राप्त करूं. Just like King Kulsekhar has told that before the mucus and bile will choke my throat, I want that I should die. हरिदास ठाकुर ने कहा है कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करें और मैं शरीर त्याग करूं. Haridas Thakur also told that I want to die in front of Chaitanya Mahaprabhu dancing. और पितामह भीष्म ने कहा है कि मेरा शरीर छूटे तो सामने भगवान का दर्शन करूं. And Bhishma Pitama also told that when I die, I want that Lord should be present in front of me. तो मेरा प्रश्न है कि वैष्णव को डेथ प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए? So the question is that what a Vaishnava should do to prepare himself for death. That which you are doing. आप जो भी कर रहे हैं वही करना है. Chant Hare Krishna. भगवान का नाम का जप करना. Associate with devotees. भक्तों का संग प्राप्त करना. And try to live in such a way that you will always remember Krishna and never forget him. इस तरीके से जीवन जीना चाहिए कि हम हमेशा कृष्ण को याद रखेंगे और कभी भी कृष्ण को भूलेंगे नहीं. As Krishna explains in Bhagavad Gita, Antakale cha mamiva mukta avasit smaran muktva kaleva ya prayati samadbhavam madhyati mam namaskuru. If you can remember Krishna at the time of death, you go back to Krishna. भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि अगर आप मुझे भगवान कृष्ण को अगर आप याद कर लेंगे मृत्यु के समय तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं. But how we will remember Krishna if we have not practiced throughout life? परंतु हम कैसे भगवान को मृत्यु के समय याद करेंगे अगर हम जीवन भर उसका प्रयास नहीं करेंगे? Death is, the most, how to say, intense moment of our life. We will not be able to remember Krishna if we have not practiced during our more peaceful moments. मृत्यु का समय हमारे जीवन का बहुत कठिन समय होता है, तो उस समय भगवान को याद करना आसान नहीं है. जब तक हम पूरी जिंदगी अच्छे से प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम मृत्यु में भगवान को याद नहीं कर पाएंगे. So therefore Prabhupada says that philosophy means to always keep death in front of us. We should always be in the mood of preparing so that we can pass that final test and remember Krishna and go back to Krishna. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये वास्तविक सिद्धांत है कि मृत्यु को हमेशा अपने सामने रखें और हमेशा मृत्यु के लिए तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर हम वो अच्छे से करेंगे तो हम भगवान के पास जा सकते हैं. My Guru Maharaj said at one point, not so long before his passing away, my Guru Maharaj is Sridhar Swami, who passed away in 2004. He said, I've looked at death and I'm not afraid. तो प्रभुजी के जो गुरु महाराज हैं श्रीमद श्रीधर स्वामी महाराज, जो कि 2004 में भगवान के धाम जा चुके हैं, उन्होंने बताया था जाने के कुछ समय पहले कि मैंने मृत्यु को सामने देखा है और मैं निश्चित तौर से बोल सकता हूँ कि मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं है. It's like you go for an examination. If you've done your homework, if you studied well, you can be peaceful. I'm going to pass that test. No problem. कभी आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं और आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया है, तो परीक्षा देने जाते समय आपको बिल्कुल भी डर नहीं होता है. आपको पता होता है कि मैं परीक्षा पास कर लूँगा. Similarly, if we are diligent in our practice of Krishna consciousness, we can face
death with confidence, knowing well, I'm going to pass that test. इसी तरह से अगर हम मृत्यु के लिए अच्छे से तैयारी रखते हैं तो मृत्यु के समय हम इस तरह से विश्वास रख सकते हैं कि इस परीक्षा को मैं पास करूँगा। Hare Krishna. Should we call it a day? That's an expression. You finish here? Anything else? Okay. Hare Krishna.